Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, State and Government, and today I am going to deliver its 5th lecture. So my dear students, in today's lecture, students will be able to discuss the responsibilities of Pakistani citizen according to 1973 Constitution. Rights हमने already discuss कर लिए थे. Now let's start it with an activity. For activity, you need a pen and a paper and write down 5 responsibilities of a good citizen. Very good. So आपने rights responsibilities लिखी and I hope you also fulfill them. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. Whoever sees wrong, he should change it by his hand. If he could not do so, then he should change it by his tongue. If he could not do so, then he should do that by his heart, and that is the weakest of the faith. So my dear students, एक हदीस में आता है कि अगर आप कोई बुराई होते हुए देखें तो उसको जोरे बाजू से रोके, नहीं रोक सकते तो उसको जबान से बुरा कहें, ऐसा भी नहीं कर सकते तो उसको दिल में बुरा समझे, और ये ईमान का सबसे वीक जो है वो दर्जा है. तो ये हर शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जुल्म के खिलाफ और बुराई के खिलाफ आवाज उठाए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द रिफ्रेश द नॉलेज. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? राइट्स आर द things that you own that you must have, and responsibilities are your duties that you must perform. And what are your responsibilities? Quickly pause the video and tell me. Very good. Now do you fulfill your responsibilities? Very good. Okay my dear students, now I request you all to please open page number 34 and 35 in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Responsibilities of Pakistani citizen in 1973 Constitution. A citizen enjoys the rights. Similarly, he also has some responsibilities according to 1973 Constitution of Pakistan, which he is bound to fulfill as a good citizen. These responsibilities are, जैसे कि हर शख्स की जो है, हर शहरी के कुछ राइट्स हैं, इसी तरह उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं हमारे आइन के तहत. ओके, सो वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? लेट्स हैव अ लुक. ओबीडियंस टू द लॉ, यानी कि लॉ की तरफ ओबे करना उसको. एवरी पर्सन इज बाउंड टू ओबे द लॉ written in the constitution. He is also responsible in case of violating any law. तो जो आइन के तहत जितने भी लॉज हैं, तमाम शहरी जो हैं उसको फॉलो करेंगे और उसके ऊपर एक्ट करेंगे. अगर नहीं करेंगे, उसको वायलेट करेंगे, तो इन दैट केस वो अकाउंटेबल होंगे. लॉयल्टी. A person should be loyal to his country. He should not do anything which is against his country, like terrorist activities. हर शख्स जो है उसको अपने मुल्क के साथ जो है वफादार होना चाहिए और उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि उसके मुल्क के अगेंस्ट हो. Casting votes. It is the right of every citizen to vote in elections. He should play his part as a responsible citizen by electing any person of his own choice. जिस तरह आपका राइट है कि आप वोट कास्ट करें, इसी तरह ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इलेक्ट करें. Defense of the country. In need of the honor, a citizen should protect his country under unusual circumstances. अगर मुल्क को जरूरत पड़े तो हर शख्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क को डिफेंड करेगा. Respect for others' rights. A citizen should respect others' rights. He should not perform any such act which would offend other person or hurt his dignity. So अगर आपके कुछ राइट्स हैं तो इसी तरह दूसरे लोगों के भी राइट्स हैं, और ये आपके पर फर्ज है कि आप उनको रिस्पेक्ट करें और उनको हर्ट ना करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान bound its citizen to fulfill some responsibilities such as obedience to the law, defense of the country, casting votes, etc. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video. So what you need to do is, here are some responsibilities written. तो आपको क्या करना है कि इनमें से सॉर्ट आउट करना है कौन सी फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कौन सी जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कौन सी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू. Hold election. So hold election is the responsibility of federal government. Then volunteer in the community. This is the responsibility of a good citizen. So this is how you will write down the responsibility under each column. Okay, आपने खुद लिखनी है, इस तरह arrows नहीं लगाने जिस तरह मैंने लगाया. So pause the video and complete the worksheet.
I hope everybody has done it. So my dear students, now it's time to note down the homework. For homework, you will write down some other responsibilities of a good citizen that could be practiced regardless of constitution boundaries. So my dear students, कुछ और responsibilities जो कि आपकी moral responsibilities हैं, that means respecting other, helping others. सो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कौन कौन सी हैं, उनको आपने लिस्ट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. नेक्स्ट डे अपने क्लास फेलोज से शेयर कीजिएगा. एंड यू विल ऑल्सो डू रिसर्च एंड एनालिसिस नंबर 2 and select any of the rights and responsibilities you have studied above and search out more details about it. Cover all the aspects such as how your rights and other responsibilities and present it in your class. So my dear students, आपने बहुत सारी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में स्टडी किया है. इनके बारे में डिटेल से आप सर्च आउट करें और एक नोट तैयार करें और क्लास में प्रेजेंट करें. आपने ये भी बताना है कि कौन सी राइट के अगेंस्ट कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है. So this is how you will complete this analysis. So my dear students, you will also do question number 6 from exercise B in your notebooks. How you can be loyal towards your country. आप अपने मुल्क के लिए किस तरह से वफादार हो सकते हैं. Write it down in your own words. And you will also do question number 1 from exercise C. What are your rights and responsibilities as a citizen of Pakistan according to Constitution of 1973? So अब आपने डिटेल से 1973 के आइन के तहत अपनी rights और responsibilities को note down करना है in your notebooks. And in the next lecture, we will discuss the importance of the rule of law against unjust and illegal activities. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.